गुजरात के पावी जेतपुर के एक गांव में ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात के पावी जेतपुर के सटून गांव में एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हुआ है। सटून गांव के गणपत नायक पिछले 20 सालों से अंधविश्वास के नाम पर ढोंग कर रहे थे। वे लोगों को परीक्षा में पास कराने के लिए जादुई पेन देते थे, बीमारियों का इलाज करने के नाम पर मालिश और धागे ताबीज देते थे। इसके बदले वे 1 से 5,000 रुपए तक की फीस वसूलते थे। इस ढोंग का शिकार कई लोग बने, जिनसे अंधविश्वास के नाम पर पैसे ऐंठे गए। હું અહીંયા ગણપતભાઈ બુવા પાસે જોડવા ગઈ હતી તો મારા પગ બતાવ્યો એને કીધું કે તમને હું માલિશ કરી દઉં એટલે મેં કીધું મારા પગમાં ઓપરેશન આવે તો કે હોય કે હજારો માણસોને મેં કે હાજા કર્યા છે માલિશ કરીને ઓપરેશન કે નહીં કરવું પડે અને મને તેલનું ગૂંઠણથી ઉપર સુધી સાથળ સુધી કપડાં ઊંચા કરીને મને માલિશ કરી દીધી અને પછી ચોખાની ચપટી દીધી. હા, પૈસાનું કીધું એ કે તમને સારું થઈ જાય ને ઓપરેશન કરવું નહીં પડે ને સારું થઈ જાય ને પાછા આવજો એટલે વિધિ કરવી પડશે. 4-5 હજાર રૂપિયા કીધા विधिમાં. जैसे ही विज्ञान जाथा को इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत जयंत पंड्या के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ गांव पहुंचकर इस ढोंग को उजागर किया। विज्ञान जाथा की टीम ने इस ढोंग का खुलासा कर बाबा से माफी मंगवाई और आगे से ऐसा न करने की कसम दिलवाई। દોરા કેમ બાંધો છો? દોરા એક પ્રાર્થના કરીને બધું પ્રાર્થનામાં આવે તમારું. દોરા બાંધો હોય પ્રાર્થના, ખાલી પ્રાર્થના કેને કહેવાય કે ત્યાં આવા પડીકા ક્યાંય આપો નહીં, દોરા આપો નહીં, તો ખાલી પ્રાર્થના કહેવાય. દોરા આપો, માલિશ કરો, અમે જોયા, અને એને પાછા કયો પ્રાર્થના કરો. તમારે કોઈ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર, તમને કોઈ પ્રાર્થનાનો ઠેકો લીધો છે? સીધો તમે કોઈ ઠેકો લીધો છે આ વિસ્તારમાં? પ્રાર્થનાનો ઠેકો લીધો તમારો ગુરુદેવે? આ તો અમે કઈ તમારે તમને મન પડે ન કરાય. બંધ કરી દઈશું, કાયદા મુજબ કરો. બસ બંધ કરી દઈશું પ્રભુ. તો કરવાનું જ હોય ને બંધ. બસ બંધ. અહીં ધક્કો ખાતો છે. આજથી બંધ પ્રાર્થના, આજથી બંધ બાપુ, પ્રાર્થના બંધ. અમને એક આ પગનો દુખાવો એમ કીધું, એ બેનને ખાલી તેલથી માલિશ કરી આલતેલો. બસ બોલ પેન જો ભાઈ આ ગુરુદેવની આકીન કે સત્યનામના આધારે એક આ ટેક સત્યનામના આધારે કે આ પરીક્ષામાં પાસ થઈ જતો હોય આ ભાઈ તો સરસ વાત. સદગુરુને મારો આદેશ, એક આરો દોરો ખાલી એક સત્યનામનો નામ લઈને આ દોરો બાંધ ના, એટલે સત્યનામ એમ કરીને દોરો બાંધી દેવાનો. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પાવી જેતપુર તાલુકાના સટુન ગામમાં સીમ વિસ્તારની અંદર છેલ્લા 20 વર્ષથી ભુવાપણું કરતા ભાઈ ગણપતભાઈ નાથુભાઈ નાયકા કે જેઓ દોરા ધાગા, લોકોને પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે બોલપેન, કોઈપણને પગમાં બીમારી હોય તો માલિશ કરવા, આવા અનધિકૃત કાર્યો કરતા હતા. અને એની માહિતીના આધારે ખરાઈ કરતા સત્ય નીકળ્યું હતું. એમને આજે કબૂલાત આપી. તેઓ કબીર પંથના છે, શિષ્ય છે, અને તેઓ બધી કબૂલાત આપી કે કોઈ પણ મહિલાના પગની અંદર આવી રીતે માલિશ કરાય નહીં મંજૂરી વગર. આવું બિનઅધિકૃત મેડિકલ સારવારમાં બાધા નાખતા હતા, દોરા આપતા હતા, પરીક્ષામાં પાસ થવાની બોલપેન આપતા હતા. તેઓ રંગે હાથે ઝડપાઈ ગયા છે અને એને કબૂલાત આપી અને માફી માંગી. गुजरात के वडोदरा में बीजेपी युवा मोर्चा ने ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान चलाया। वडोदरा में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ट्रैफिक अवेयरनेस बेहद जरूरी हो गई है। इसी के मद्देनजर आज वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा ट्रैफिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान डांडिया बाजार ब्रिज के पास स्थित सोलर पैनल के नीचे 100 से अधिक ऑटो रिक्शा पर ट्रैफिक अवेयरनेस के संदेश वाले स्टिकर लगाए गए। इस कार्यक्रम में वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पार्थ पुरोहित, बीजेपी के महासचिव सत्येन कोलाबकर और वडोदरा ट्रैफिक एसीपी दत्तात्रेय व्यास समेत बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछले कई टाइम से बड़ौदा में और गुजरात और पूरे देश में हम देख रहे अकस्मात की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना ड्राइव चलाते हैं, पर दंडात्मक कार्यवाही करने के बाद या कानूनी कार्यवाही होने के बावजूद भी ये अकस्मात कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो आज मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को एक अवेयरनेस हो और उनको ऐसा खुद महसूस हो कि भाई स्पीड कम करनी चाहिए या फिर संभाल कर चलाना चाहिए। ऐसे 25 एक स्लोगन हमने तैयार किए और पूरे बड़ौदा में ये रिक्शा जब घूमेगी तो जो लोग पढ़ेंगे उनको भी लगेगा कि भाई ये ट्रैफिक का
रूल्स फॉलो करना चाहिए। और हमारा परिवार है, वैसे सामने वाला कोई परिवार है, उनके लिए ये मैसेज आपने पढ़े होंगे कि अंकल हूँ मारा पप्पानी राह જોઈ રહી છું, प्लीज गाड़ी धीमे चलाओ। एक बाળક, एक लड़का या एक लड़की अपने पिताजी के लिए अपील कर रही है कि भाई गाड़ी धीमे चलाना, मेरे पापा घर आ रहे हैं। ये आप देखोगे, बी अ रक्षक इन समवन्स लाइफ नॉट रक्षित। अगर जिंदगी आपको जीवन कभी मौका दे तो किसी के लाइफ में रक्षक बन के आना, रक्षित बनकर मत आना। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ ड्राइव स्लोली। माता पिता का भी एक मैसेज है कि भाई मेरे घर पे बूढ़े माँ बाप है, उनका एक लौता मैं बेटा हूँ, तो आप थोड़ा संभाल कर चलाएं, मुझे घर पहुँचना है। होली की दिन जो घटना बनी कारेली बाग में, बहुत दुखद घटना थी। उसमें एक व्यक्ति की जान गई, बाकी लोग घायल हुए। और ऐसी घटना न बने, और वो ऐसे कुछ सूत्र हमने बनाए हैं, बैनर्स होर्डिंग्स ऐसे बनाए हैं, रिक्शा के पीछे लगाने वाले हैं, जिसको पढ़ के बाकी लोग ये अवेयर हो कि ऐसी हमको कोई घटना न बने, उसके लिए अपने वाहन जो है वो कम स्पीड में चलाने चाहिए। खास करके युवा को संदेश है कि हर परिवार में, आपके भी परिवार में कोई आपका वेट करता होगा। ऐसा नहीं है कोई दुर्घटना बनती है तो सामने वाले को नुकसान होता है, जो चलाने वाला उसको भी नुकसान होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर का एक नम्र प्रयास है कि सभी लोग अपने सुरक्षित होके वाहन चलाए, अपनी भी सुरक्षा करे और सामने वाले की भी सुरक्षा करे। अकस्मात जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अवेयरनेस की बात है, तो तकरीबन 1 साल से जब से हम आए हैं तो बहुत तकरीबन 100 से ज़्यादा अवेयरनेस के कार्यक्रम किए हैं। सीपी साहब की मार्गदर्शन से, डीसीपी साहब की सूचना से अवेयरनेस के कार्यक्रम, स्पेशली हेलमेट है, रॉन्ग साइड है, चालू गाड़ी पे मोबाइल से बात नहीं करना, हर तरह से, हर एंगल से अवेयरनेस के कार्यक्रम किए गए हैं और आज भी चालू है। वडोदरा में स्ट्रीट वेंडर्स को न्याय दिलाने की मांग तेज हुई है। वडोदरा शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को उनके अधिकार दिलाने और अनावश्यक दंड वसूली रोकने की मांग को लेकर आज नरेंद्र रावत और अमी रावत ने निगम अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। लारी गल्ला और फेरी वालों को रोजगार का अधिकार देने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की गई। साथ ही प्रशासन से अपील की गई कि वे स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी बाधा के व्यापार करने दे। वडोदरा नगर निगम द्वारा लारी गल्ला वालों के लिए जाने वाले 500 रुपए प्रशासनिक शुल्क में बड़े घोटाले की संभावना जताई गई है। इस मामले की जांच की मांग करते हुए नरेंद्र रावत ने कहा कि यदि जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्त के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। લારી ગલ્લાઓને ગેરકાયદેસર રીતે જે પ્રકારે કોર્પોરેશનને પોલીસ દ્વારા હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે અને એમને હપ્તાખોરીના નામે કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવે છે, એ વાત અમે કોર્પોરેશન સમક્ષ મૂકવા આવ્યા છીએ। વાસ્તવિકતા એ છે કે 2014માં કોંગ્રેસ સરકારે લારી ગલ્લા, પથારાવાળા, ખૂમચાવાળા અને ફેરિયાઓને રોજગારનો અધિકાર રોડ ઉપર આપ્યો છે અને એનો કાયદો બન્યો છે, એને કાયદેસર રીતે કોઈ હટાવી શકતું નથી। પરંતુ કોર્પોરેશન દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે એમને વારંવાર ઉઠાવી હપ્તાખોરી કરી આ ગરીબોની રોજગારીને આંચકી લેવામાં આવે છે। વાત મહત્વની એ છે કે જ્યારે કાયદો 2014માં બન્યા પછી ગુજરાત સરકારે પણ ફરજિયાત કાયદો પસાર કર્યો અને તમામ કોર્પોરેશને વિદિત કરી કે આ લોકોની તમે મંડળીઓ બનાવો અને જે જગ્યાએ સ્થાયી હોય એ જગ્યાએ સ્થાયી કરો। ટ્રાફિકની સમસ્યા હોય કે અન્ય કારણો હોય તો એમને 200 મીટરના અંતરે એમને ત્યાં વિસ્થાપિત કરવા પડે। પરંતુ કોર્પોરેશને આજ દિન સુધી એમને કોઈ પણ પ્રકારની હોકિંગ ઝોન બનાવ્યા નથી। 2018માં કોર્પોરેશનની સભામાં આ કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો અને એમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની ધારણા આપી। આજે 2024 થઈ, આજ દિન સુધી આ લોકોને રોજગારીનો અધિકાર આપ્યો નથી। આજરોજ કોંગ્રેસના અમારા સાથી સભાસદ શ્રી અમીબેન રાવત અને એમના હસબન્ડ નરેન્દ્રભાઈ રાવત દ્વારા એક આવેદનપત્રની રજૂઆત માટે તેમના દ્વારા મારી પાસે સમય માંગવામાં આવ્યો હતો અને એ મુજબ એમને મને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। આ અંગે કમિશનરશ્રી, 5 પદાધિકારીશ્રીઓ અમે સૌ સાથે બેસી ચર્ચા વિચારણા કરીશું અને આ વિષયની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ પણ કરવામાં આવશે અને ચર્ચા વિચારણા કરી અને સૌ સાથે મળીને એ દિશામાં યોગ્ય નિર્ણય લઈશું।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के बड़ोदरा में विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस पर ट्राई कलर हॉस्पिटल द्वारा विशेष आयोजन किया गया। बड़ोदरा में विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस के अवसर पर आज ट्राई कलर हॉस्पिटल द्वारा IUCL कैंपस के कुंदन हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में IUCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिप्लव विश्वास और IUCL के जनरल मैनेजर डॉक्टर दत्ता राय नागपुरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ट्राई कलर हॉस्पिटल की वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया दलाल ने टीबी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और इस बीमारी से बचाव के उपायों पर चर्चा की। इसके अलावा ट्राई कलर हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्येश पटेल ने बताया कि टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और सही इलाज करना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर लगभग 500 लोगों ने टीबी मुक्त भारत के संकल्प के साथ एक वॉकथॉन में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य समाज में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना था। वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च, हर साल किया जाता है और हर साल की तरह हमारे देश में जो नेशनल लेवल पे स्कीम है टीबी मुक्त भारत, उसी के लाइंस पे इंडियन ऑयल ने भी टीबी मुक्त इंडियन ऑयल अभियान शुरू किया है
और इसके बारे में लोगों के बीच में ज्ञान बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में नॉलेज बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में टीबी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने आज वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व किया है। ये मॉर्निंग वॉक है। इसके बाद हमारे विशेषज्ञों से कुछ स्पेशल वक्ता हैं जो आके हमको ज्ञान देंगे, इसके बारे में बताएंगे, ताकि हमारा पूरा पॉपुलेशन, पूरा जो इंडियन ऑयल से एसोसिएटेड लोग हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबको टीबी के बारे में अवेयरनेस आए और देश में से टीबी को खत्म करने की मुहिम में हम लोग आगे बढ़ सकें। आज ट्राई कलर हॉस्पिटल ने IOCL रिफाइनरी के साथ मिलके एक वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य था ट्यूबरकुलोसिस की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कॉमन पीपल में। आज 24 मार्च भारत सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि कॉमन पब्लिक में ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये बीमारी आगे हम कैसे मिटा सकते हैं, ये अवेयरनेस डेवलप करने के लिए। और उसका मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसका पार्ट है वॉकेथॉन। वॉकेथॉन आज रिफाइनरी कैंपस में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां 200 से 300 लोग ने हिस्सा लिया हुआ है और अभी वॉकेथॉन ख़त्म हुआ है और हम आगे उनकी अभी ट्यूबरकुलोसिस की अवेयरनेस की ड्राइव करेंगे और साथ साथ में उनको CPR की ट्रेनिंग भी देंगे। वडोदरा में बरोड़ा नायर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा केरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वडोदरा में बरोड़ा नायर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 22 और 23 मार्च को केरल फेस्टिवल 2025 भव्य रूप से मनाया गया। इसके साथ ही एसोसिएशन के गौरवशाली 30 वर्ष भी पूरे हुए। वडोदरा के उर्मी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में केरल की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने वाली कई गतिविधियां आयोजित की गई। फूड फेस्टिवल में केरल के पारंपरिक व्यंजनों का विशेष स्वाद अनुभव किया गया। वहीं मेगा तिरुवथिरा नृत्य, बाउल गीत और मंत्रमुग्ध करने वाले वायलिन फ्यूजन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मोहित कर दिया। इसके अलावा इस अवसर पर कथकली, थेयम, कलारीपट्टू और एरुथुलकली जैसी पारंपरिक कला शैलियों का प्रदर्शन भी किया गया। इस आयोजन में BRG ग्रुप के चेयरपर्सन लता गुप्ता, उर्मी सर्कल की MD राधिका नायर और बरोड़ा नायर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन नायर सहित प्रतिष्ठित अतिथि और समुदाय के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा में पानी की टंकी और संप की सफाई के चलते लोगों को पानी नहीं मिलेगा। वडोदरा महानगर पालिका के जल आपूर्ति विभाग द्वारा शहर की अलग अलग पानी की टंकी और संप की सफाई शुरू की गई है, जिसके तहत आज गोत्री में, गायत्री नगर और हरिनगर में पानी की टंकी की सफाई की जा रही है, जिस वजह से कई लोगों को पानी नहीं मिलेगा। वडोदरा महानगर पालिका की टीम द्वारा गर्मियों के दिनों में ये कार्यवाही की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी भी हो सकती है। वडोदरा के गोत्री हरिनगर इलाके में ये सफाई काम जारी है, जिस वजह से कई लोगों को पानी नहीं मिलेगा। आज हमारे गायत्री नगर पानी की टंकी पे संप और टाकी का सफाई का कामगिरी चालू है। इसके लिए 11 बजे से कामगिरी चालू होगा शाम तक। लिए शाम का पानी जो है गायत्री नगर, गोकुल नगर, संस्का नगर का जो विस्तार है उधर पानी शाम को मिलेगा नहीं, क्योंकि सफाई का जरूरी है काम करवाना, क्योंकि अंदर मिट्टी होती है। इसके लिए हम उसका आयोजन कर रहे हैं ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उसका करें, पानी का सफाई का। गुजरात में ड्रग्स के बढ़ते मामलों के चलते सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आई है। इसी के चलते डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा ने भी कई सवाल उठाए हैं। कया प्रकारना ड्रग्स, કેટલા કિંમતનો કેટલો જથ્થો મળ્યો, ત્યારે ગૃહમંત્રી શ્રી જવાબ આપવા ઊભા થયા, પણ અધૂરો જવાબ અને ગોળ વાતો એમણે કરી। ત્યારે અંકલેશ્વર, ભરૂચ જિલ્લો હોય કે સુરત જિલ્લો હોય, એમાં દેશ અને દુનિયાના રોજગાર અર્થે અનેક લોકો આવતા હોય છે। આ ઔદ્યોગિક વસાહતોમાં ઉદ્યોગોના આડમાં જે ડ્રગ બનાવવાના જે ચાલે છે, આપણે બધાએ જોયું હશે, ઓક્ટોબર 24 માં
અંકલેશ્વરની પાનોલી જીઆઈડીસીમાં આવકાર ડ્રગ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાંથી દિલ્હીની પોલીસે રેડ કરી અને 518 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાયું, જેની કિંમત અંદાજે 5000 કરોડ આંકવામાં આવી હતી. તેવી રીતે ત્યાંની સાયકા જીઆઈડીસીની વેન્ચર ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે કંપની છે તેમાં 1300 કિલો લીટર લિક્વિડ અને 83 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાયું હતું, તેની કિંમત 1383 કરોડ આંકવામાં આવી હતી. એ જ પ્રકારે પાનોલી જીઆઈડીસીની ઇન્ફિનિટી રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ જે કંપની છે એમાં મુંબઈથી એન્ટી નાર્કોટિક્સની ટીમે રેડ પાડી અને 2400 કરોડથી પણ વધારેનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. ત્યારે ગૃહમંત્રી લાજવાના બદલે ગાજવાની વાત કરતા હોય, ભરૂચ પોલીસ લાજવાની બદલે ગાજવાની વાત કરતી હોય, યાત્રા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સની વાત થાય છે ત્યારે પંજાબ, ઉડતા પંજાબની વાતો મૂકીને જવાબ આપવામાં ખસી જવાની વાતો કરતા હોય, પણ આ વરવી વાસ્તવિકતા છે. મેં ત્યાંના સ્થાનિક ધારાસભ્ય તરીકે ભરૂચ પોલીસને 35 જેટલા સીસીટીવી ફૂટેજ જે પોલીસ અધિકારીઓ રાબેતા મુજબ દારૂના ઠેકાઓ પર હપ્તા લેવા જાય એવા 35 જેટલા અધિકારીઓના સીસીટીવી ફૂટેજ સુધી એસપી ને આપ્યા હતા, છતાં આજ દિન સુધી કોઈ જ કાર્યવાહી નથી થઈ. ત્યારે આટલા મોટા પ્રમાણમાં જે અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી માં જે ડ્રગ્સ પકડાય છે એની પાછળ પણ હપ્તાખોરી જવાબદાર છે, અમુક પોલીસ અધિકારીઓ જવાબદાર છે. એટલા માટે આટલા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સ ચાલતું હોય એ સૂચવે છે. બીજું, મેં આ કંપની પર જે કંપનીઓમાં ડ્રગ્સ બનાવવાનો પર્દાફાશ થયો, પકડાયો, એના પર શું કાર્યવાહી કરી અને કેટલા આરોપીઓને પકડવાના બાકી છે. ત્યારે 100 જેટલા આરોપીઓ આજ દિન સુધી ડ્રગ્સના પકડવાના બાકી છે, જે ગંભીર બાબત છે. અને આ કંપનીઓમાંથી પાનોલી જીઆઈડીસી ની ઇન્ફિનિટી રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કંપની ફરી રાબેતા મુજબ ચાલુ થઈ ગઈ છે. એ સૂચવે છે કે એમના હપ્તાઓ કમલમ, ગાંધીનગરના કમલમ સુધી આવતા હશે તો જ આવા ડ્રગ્સ જેવી ગંભીર ગુનામાં પકડાયેલી કંપનીઓ પણ પાછી ચાલુ થઈ જાય છે. ત્યારે ગુજરાતની પોલીસ અને સરકાર આ ડ્રગ્સ માફિયા પર કડકમાં કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે, એમના વરઘોડા કાઢે, એમને ત્યાં જીબીના રેડ પાડે, એમના ત્યાં બુલડોઝર મોકલે, એવી અમે માંગ કરીએ છીએ.